respected honorable मंत्री जी and सब लोगों के लिए प्रणाम. आज today I'll be speaking on diseases in sandalwood and management. थोड़ा like ये disease का ऊपर थोड़ा basis जानता है to understand little basics and then we will go to the उसके बाद चंदन का रोग हम चलेंगे like so एक पेड़ का health depends on क्या क्या है like it's basically a plant depends on a good environment. हम environment बोलेंगे तो what are all the factors? It could be a temperature, humidity, that's moisture, then is the soil conditions. So all this ये पूरा environmental factors अच्छा होना तो हमारा पौधा healthy, it will be in a healthy conditions. इस factors में कोई भी factors में either temperature, humidity और rainfall, इसमें कोई भी change, any kind of change होगा तो that is that's but changes in this environment. It वो हमारा पौधे को susceptible, it will make the plant susceptible or the plant will get or it will get बीमारी हो जाएगा plant. So ये slide में मैं क्या बोल रहा था आजकल diseases like ये रोग spread like ये पौधों का diseases है ना, ये हमारा इंसान का disease के जैसा बहुत fast spread हो रहा है. Basically क्यों होगा तो it is due to the like climatic conditions, like the as I told change in climatic condition, like 10 साल से पहले कैसे climate और weather conditions था अभी वैसे नहीं है, बहुत change हो रहा है. इसलिए तो ये climate change होने के कारण में ये pathogens होना like micro organisms बोलते हैं हम, वो friendly भी है and like वो negative consequence like can और negative भी है micro organisms, वो micro organism हम pathogens बोलते हैं. So so there are cases where like हम बोलेंगे वो friendly micro organisms, वो उनका conducive environment or when it is getting favorable environment, it can turn into a pathogens also. Okay, so that is what I want to say here. This climatic conditions or the change in the weather conditions can like even change the virulence or the nature of the microorganisms itself. So like as a plant pathologist or a plant doctor, हमारा काम क्या होगा तो diagnosis करना है, पौधे में diagnose करना है, on field diagnosis होगा and laboratory diagnosis होगा. So ये थोड़ा ये फोटो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं तो इधर शो कर रहा हूँ. आप उधर देख सकते हैं एक बीकर का अंदर एक थोड़ा स्टेम है, वो स्टेम का नीचे से थोड़ा स्लाइमी वूज लाइक सब्सटेंस आ रहा है. वो कुछ भी नहीं है, वो बैक्टीरिया है. वो स्लाइमी सब्सटेंस हमको बोल रहे हैं ये पौधा का पोर्शन अफेक्टेड है, इन्फेक्टेड है. दैट्स ऑल. ये तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लैब में कर रहा हूँ. ये और बहुत है लेबोरेटरी स्टडीज में ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ वो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉजिंग द डिजीज, लाइक वो बीमारी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कॉज होगी वो तो लेबोरेटरी में आइडेंटिफाई होगा. इससे पहले लाइक हम लाइक एज अ प्लांटेशन ओनर और अ ग्रोयर, आप लोग सब चंदन ग्रो कर रहा हूँ, कल्टिवेट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत थोड़ा ये डिसीज के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल हमारा नर्सरी और प्लांटेशन इन केस टू वेदर वो हेल्थी है और नहीं है पता करना चाहिए. क्या हो, व्हाट शुड वी डू, क्या करना है. सो बेसिकली हेल्थ, पौधा का हेल्थ हम बात करेंगे तो दो चीज है. वन इज एबियोटिक
and biotic. A biotic, like biotic, when we talk about biotic, it could be pathogens और the pest. Pest होना तो broad term है, वो pest में insects भी आएगा, even animals आएगा, humans भी आ जाएगा pest. But in case of वो pathogens है ना, वो उसका pathogens का अंदर microorganisms, वो generally called as parasitic microorganisms, वो आएगा. दूसरा क्या है तो abiotic environment. Abiotic agent or the factors is the like unhealthy pedo plants can be due to chemicals hoga, weather conditions hoga, or even any mechanical damage by the tractor, like any kind of mechanical damage can also be a abiotic factor. And next one is the nutrition का problem. वो भी will be classified under abiotic. So these when we could recognize and differentiate ये दोनों चीज whether हमारा plants is due to abiotic or biotic, 50% of our diagnosis is solved. And उसके बाद in how to कैसे हम पता करेंगे ये तो बायोटिक और एबियोटिक. इन वो बायोटिक में कैसा होता है, सिम्टम्स हम सिम्टम्स क्या बोलेंगे तो वो तो इट इज दी प्लांट्स मे नॉट बी, एक प्लांट बीमारी होने के बाद वो तो बात नहीं करेगा, वो तो डिस्प्ले होगा, लाइक कैसे मैं तो इन्फेक्टेड हो, आई एम डिजीज्ड, वो तो सिम्टम्स के बारे में दिखाएगा, इट विल शो बाय इट्स सिम्टम्स. सो वो इन सच काइंड ऑफ सिम्टम्स वो तो इट विल बी वो एक प्लांट अफेक्ट होने के बाद वो अगला नेक्स्ट प्लांट नियर बाय प्लांट्स आल्सो विल गेट इन्फेक्टेड. एंड इन केस ऑफ एबियोटिक वो वैसे नहीं है, वो लैक ऑफ सिम्टम, वो वैसा सिम्टम है ना, वो नेक्स्ट दैट इज प्रोग्रेशन, द सिम्टम प्रोग्रेशन will not be there in case of abiotic. So this is one good way of identifying to know whether the abiotic or biotic. And it is like as a cultivator, हम तो in case of like to understand the health of the plant, तो बीमारी study करने के लिए monitoring and observation the major role is there. So हम तो लाइक रेगुलरली ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है, प्रॉब्लम भी नोटिस करना है, पौधा के प्रॉब्लम क्या है, लीफ येलो हो गया और लीफ ड्राई हो रहा है, लीफ शेड हो रहा है और स्टेम सूख हो रहा है, काइंड ऑफ वो तो प्लांट अदर देन लाइक एक हेल्दी प्लांट शुड बी लाइक इट शुड बी ग्रीन इन कलर. अपार्ट फ्रॉम इससे अलावा कोई भी काइंड ऑफ सिम्टम्स वो प्लांट is display कर रहा हो तो वो then it is the problem. So these kind of problems should be observed and it should be monitored. So that is a major role of a plantation owner or even a nursery manager. It's a very important role. And abhi our patterns, disease patterns, that is बीमारी का pattern, how it is spreaded. Oh, if it is a biotic, वो तो it will be in scattered. It will be in scattered. Like उधर हिंदी में उधर slide में दे दिया. But if it is a abiotic, impact will be a larger area because it could be a soil problem or it could be any insecticide or pesticide problem. And distribution of symptoms, biotic में कैसे होगा? It will be random. The entire nursery area, the affected plants will be random. It will be hotspots here and there, not a kind of continuous symptom progression we cannot see in biotic. While in case of AR, it will be uniform. All the plants would have been infected. Though this is not a sandal, but I am just a photo of इस फोटो में आप देख रहा है ना, ये तो ऐसे ही होगा plantations or nursery also. A typical example
for a biotic problem, the patches hoga, scattered. And this is a cotton field plant where the problem will be at a stage. Entire plants will be affected if it is a abiotic में कारण है ना तो पूरा plants affect हो जाएगा. ये हमारा ये तो प्रॉब्लम हमारा वी फेस्ड हमारा इंस्टीट्यूट ने फेस किया. ये तो एबायोटिक का प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम इधर है ना तो पॉटिंग मिक्सचर का प्रॉब्लम. पॉटिंग इसलिए तो द प्लांट पूरा स्ट्रेस हो गया. एंड ये हमारा माइक्रो पैथोजेंस है ना, पैथोजेंस दे आर अपॉर्चुनिस्टिक. ये वैसा प्लांट स्ट्रेस्ड प्लांट्स विल बी इजीली अफेक्टेड बाय द पैथोजन. सो इसलिए तो ये पूरा पॉटिंग मिक्सचर कारण के लिए स्ट्रेस प्लांट्स टेकन ओवर बाय मिल्ड्यू डिसीजेस. या as like वो तो अभी तक फील्ड का लाइक डायग्नोसिस हम देख लिया. आजकल क्या हो रहा है ना, लाइक फार्मर्स और एनी ओन कल्टिवेटर्स, वी आर गेटिंग इन्फेक्टेड फोटोज भेज रहा है, लाइक इन्फेक्टेड प्लांट्स और ट्रीज का फोटोज भेज रहा है. बट साइंटिफिकली by seeing वो फोटो देख के immediately ठीक है ओ ये स्प्रे करो वो स्प्रे कर लीजिए, that is not a scientific way of management. When we talk about इधर we are अभी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बात कर रहा हूँ. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच वो तो नेकेड it can't be seen by naked eye. Can be, we always need to be it needs to be diagnosed on the laboratory condition. laboratory में कुछ स्टडी करना है. So वो तो सैंपल्स, इन्फेक्टेड सैंपल्स लेबोरेटरी के विल ब्रिंग टू लेबोरेटरी आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन. एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत है, तो फंगई होगा, बैक्टीरिया होगा एंड वायरस होगा. सेवरल बहुत मेथड्स है आजकल. लेटेस्ट तो मोलिकुलर मेथड्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्फोलॉजिकल, दैट इज माइक्रोस्कोपिक स्टडीज टू मोलिकुलर स्टडीज बहुत है. एंड वो तो बीमारी बहुत सीरियस होना तो ये पूरा स्टडीज करना ही पड़ेगा. देन उसके बाद हम मैनेजमेंट रिकमेंडेशन विल गो फॉर कंट्रोल मेजरमेंट. सो दिस इज द एथिक्स टू बी फॉलोड इन मैनेजमेंट ऑफ एनी डिजीज. तो व्हाट चंदन का स्टेटस क्या है? सो पहले 10-15 साल से पहले चंदन का ओरिजिन तीनों स्टेट, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. ऑफ कोर्स दो natural population, other states also natural population reports were there, but major Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. And lately चंदन का अवेयरनेस बहुत हो गया. हमारा पूरा इंडिया में, पूरा देश में बहुत हो गया. वेरियस cultivators, progressive farmers, they came forward to take up sandalwood plantation. So current आज का trend क्या है ना, तो apart from this 3 states, पूरा इंडिया में like almost most of the states, the cultivation of sandalwood हो रहा है. So the here अभी situation क्या है ना, तो हमारा देश में क्लाइमेटिक जोन्स है, 15 क्लाइमेटिक जोन्स है. सैंडलवुड कल्टीवेशन ऑफ सैंडलवुड बेसिकली हम इधर सिंस सैंडलवुड कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला का ओरिजिन था, सो इसलिए तो अभी पहले कल्टीवेशन इस तीनों स्टेट्स में था. अभी क्यों बहुत like since the awareness of sandalwood and its commercial value, people are getting more knowledge of this commercial value of the sandalwood. They want to grow sandalwood. Now it has been distributed in all throughout all the climatic zones. So every climatic zones में पहले बोल दिया ना environmental factors. एक zone में different environmental factors है, और temperature, humidity, all these factors वो अलग-अलग है. So एक स्पीशीज, एक ओरिजिन सैंडलवुड एक ओरिजिन ऑफ साउथ इंडिया में, और इट्स ओरिजिन ऑफ साउथ इंडिया सैंडलवुड. बट सिंस
when it has been introduced to other places, it is prone for different kind of climatic conditions, and which will have impact in the activation of the pathogens.